Today we are going to talk about the Madhya Pradesh High Court recent judgment upon whether the act of liking or supporting a defamatory WhatsApp message posted by others amounted to involvement in the offense of defamation. The case name is Air Marshal Harish Masand versus the state of Madhya Pradesh and others. If we talk about the background of this story, Justice Subodh Abhyankar deliberated on this issue while dealing with a petition moved by a retired Air Marshal Harish Masand challenging a trial court's refusal to take cognizance of a complaint against certain housing society members who he had accused of defamation. Initially, Masand had filed a private defamation complaint against 8 persons. उसके बाद में क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सिर्फ 2 अक्यूज्ड के खिलाफ. एक का नाम संदीप था और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश. फिर क्या हुआ, दिस केस जो चला उसमें जो थे फैमिली मेम्बर्स जो थे मिस्टर गुप्ता के, उन्होंने बोला था कि एक्चुअली में उन सभी ने संदीप गुप्ता का साथ दिया था मसंद साहब की बुराई करने के लिए, जो कि व्हाट्सएप पे हो रहा था. और इसी के साथ ही साथ पहूजा वॉज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. इसके बाद में आफ्टर एन एडिशनल सेशन कोर्ट agreed with the trial of court's decision to take cognizance against only 2 of the accused persons, Masand moved to the High Court for relief and sought to proceed against all accused persons. The High Court, however, said that the district courts had committed no error. उन्होंने क्लियर बताया, it was a single bench, noted that only Gupta and Pahuja had expressed their views in detail while the others had only made passing remarks in the agreement with them. अब कोर्ट हैज़ एडेड समथिंग इम्पॉर्टेंट इनटू इट, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है. कोर्ट ने कहा कि merely expressing one's agreement to a post by one liner may be tantamount to agreeing to the expression made by the other members of the group accused persons. However, this court is also required to see the conversation in the WhatsApp group in its entirety, कि आखिर में हुआ क्या था, क्या शुरुआत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी और फिर क्या हुआ, and has to see the context in which it is made and also the purpose for which the WhatsApp group was formed. ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचती, और ये हुआ. उन्होंने पूरी बैकग्राउंड चेक की, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, किसने क्या कहा था. They found out that it proceeded to look at the nature of the WhatsApp group in which the messages were posted and found it had been formed to facilitate the activities of the housing society. इसके बाद में कोर्ट ने ये भी मालूमात की कि the Gupta's family members and others apart from the 2 main accused could not be held liable for defamation as any comment made by them appeared to have been in the spur of the moment and without any intent to defame Masand. तो इंटेंशन नहीं दिखाई दी और कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्री हैश प्लानिंग नहीं थी. तो इसको ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा दीज कमेंट्स अपीयर टू हैव बीन मेड विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, मतलब बिना सोचे समझे अचानक से उनको शायद वो गुस्से में एक मोमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने बस बोल दिया. दे अपीयर टू हैव बीन मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग द petitioner and in such circumstances they cannot be held liable for long posts which are made by only 2 members of the said group, namely Sandeep Gupta and Lieutenant Colonel Jagdish. The court said while dismissing Masand's petition. उनका जो petition था उसको dismiss कर दिया गया. Have a nice day.